अच्छी तरह, टाइम फ्रेम भी नहीं, अच्छी तरह से आप इसको देखें और फिर वो उसका ड्राफ्ट पेश करें कौमी असेंबली में। तो ये काफ़ी अर्सा ये रहा। आप समझें कि शायद अप्रैल में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आई 72 में, और शहीद भुट्टो बने थे 71 के दिसंबर में, प्रेसिडेंट भी, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी। तो 3-4 महीने के अंदर ये इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बनी। लेकिन उसके बाद 13 अगस्त को यह आइन जो है पास हुआ हमारे कौमी असेंबली में। लेकिन उससे पहले, मैंने पहले भी जिक्र किया, मुनासिब समझता हूँ कि भुट्टो शहीद कितना डेमोक्रेट था और कितनी कंसीडरेशन थी, न सिर्फ अपने पार्टी के लोगों के लिए, अपोजिशन के लिए भी, कि उनकी भी कोई हैसियत है। वो भी अपने अपने इलाके से इलेक्ट होके आए हैं। 2 लाख की, 2.5 लाख की उस वक्त थी वोटर्स की लिस्ट में कि वो नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनेंगे, या 4 लाख थी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन उन्होंने कहा हाँ, उस वक्त चलते चलते हर एक प्रोविजन पे, हर एक आर्टिकल पे घंटे नहीं लगते थे, 3-3, 4-4 दिन भी लग जाते थे। ये इस तरह से आइन पास हुआ है। काफ़ी पीपल हैव टेकन पेन्स, कमेटी ने भी, मेंबरान ने भी उस वक्त के, और शहीद भुट्टो ने शुरू में ही उन्होंने कहा मैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ, पार्लिमानी निज़ाम चाहता हूँ। और उसके साथ साथ ये अहम बात है कि ये इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, इस्लाम के प्रोविजंस उसमें होने चाहिए। तो जब मुफ्ती साहब ने कहा कि इसमें इस्लाम के प्रोविजंस नहीं हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पहला दूसरा आर्टिकल देखें कि हमने कहा है कि इस्लाम हमारा दीन है, और ये नहीं कि इस्लाम हमारा दीन है। आप आगे आर्टिकल्स देखें, हमने कहा है कि कोई भी कानून शरीयत के मुतसादिम नहीं होगा, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा, और वो डेमोक्रेटिक आइन तो होगा, लेकिन होगा इस्लाम के जो भी शरीयत के प्रोविजंस हैं उनके लिमिट्स के अंदर वो होगा कोई कानून। और जो कानून बने हुए हैं पहले हमसे, या पहले डिक्टेटर्स के ज़माने में, अगर वो मुतसादिम हैं इस्लाम के या शरीयत के, तो उनको भी लाया जाएगा इस्लाम के शरीयत के मुताबिक, और कोई भी कानून। तो आप इसको, आप क्या था, मुफ्ती साहब बहुत ही इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा जी ये मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने, मैं पहले भी कहा था मादरत के साथ, चेयरमैन साहब के साथ, कि डेमोक्रेसी का अहम जो उन्होंने स्टेप लिया कि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और इस्लामिक प्रोविजंस के सिलसिले में अपोजिशन, छोटी अपोजिशन, 35 मेंबर्स थे तकरीबन, उन्होंने प्रोटेस्ट में एहतियात किया और निकल गए कि नहीं ये हमें पहले बताओ। भुट्टो साहब ने कहा कि जी ये आइन सारे मुल्क के लिए है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के मेंबरान के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क के अवाम के लिए है। तो ये भी तो किसी इलाके से इलेक्ट होके आए हैं, तो उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू सुननी चाहिए। ये नहीं कि हम ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आइन पास करें और कुछ इलाकों के जो नुमाइंदे हैं जिनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है वो ना आए। तो इसलिए उन्होंने एक छोटी सी कमेटी बनाई कि वो जाके अपोजिशन के लोगों से बात करें, और उसमें यकीनन विजन जो साहब मरहूम का बड़ा किरदार था, वो भी अपोजिशन में था, गौस विजन नाम भी याद आ गया। तो उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी मैं कहता हूँ कि वो आए। शहीद भुट्टो डायलॉग के बादशाह थे मैं कहूँ। उन्होंने कहा आए मेरे पास, सिर्फ मेरे सामने आके बैठे, देखो मैं कैसे उनको मनाता हूँ। 1 घंटे में उन्होंने कहा नहीं हम आते हैं। 1 घंटे के अंदर उन्होंने मना लिया शहीद भुट्टो ने। यही
ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात पे याद आता है, मैं टाइम भी नहीं लूँगा, और अगर कोई इशारा न दे तो मैं इशारे से पहले ही बैठ जाऊँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा वसी है कि उसकी प्रोविजंस को, इसके चैप्टर्स को मैं बात करूं तो मैं घंटों तक बात कर सकता हूं। लेकिन खैर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में भुट्टो साहब ने कहा कि एक तो ये बताया मैंने कि डेमोक्रेटिक इतना था कि उन्होंने कहा नहीं आए, और 1 घंटे के अंदर जब वो जा रहे थे इंडिया, हमारे 90,000 कैदी उनके कब्जे में थे, और हमारा सिंध का इलाका कोई 5,000 स्क्वायर मील सर, वो भी इंडिया के कब्जे में था। वो कौन सा इलाका? नगर पार्कर का, छाछरों का, और जहाँ अभी बिजली बनती है, कोयला बनता है, वो इलाका इंडिया के हाथ में था। तो अपोजिशन ने उनको कहा आप किस बलबूते पे जा रहे हैं, इंडिया से बात करेंगे किस बलबूते पे? उन्होंने कहा अवाम की ताकत से जाऊंगा और इंडिया को मनाऊंगा। कितना हौसला उनका, इतना जल्दबाज उनका। तो वहाँ भी उनका, मैंने जैसे कहा कि डायलॉग के बादशाह थे। शिमला मुआहदा मशहूर है शहीद भुट्टो का। वहाँ से डेलीगेशन गई, इंदिरा से मिले, वो मान नहीं रही थी। भुट्टो साहब ने कहा था कि माई मैं आपको मनाऊंगा, किसी तरह से भी मनाऊंगा। तो शिमला में 2-3 दिन ठहरे, बिल्कुल नहीं मान रही। तो उन्होंने अपने डेलीगेशन को कहा चलो बिस्तर बांधो, वापस चलते हैं, ये नहीं मान रही। वो सारे लोग बिस्तर बांध के निकल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मैं ज़रा 1 घंटा उनसे रुखसत भी लूँ, और उनसे 5-10 मिनट बात कर लूँ। तो वहाँ कोई लान थी, उस पर इंदिरा गांधी और ये टहलते टहलते 1 घंटे के अंदर वापस आया कि भाई वापस आओ, वापस आओ, हमारा फैसला हो गया है। 90,000 कैदी भी वापस हो रहे हैं, हमारा इलाका भी वापस हो रहा है। तो जी शिमला कार्ड मैं समझता हूँ अभी भी जो बातें होती हैं गवर्नमेंट्स की, अभी हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, ये समझो वारिस हैं उस शिमला कार्ड। तो इंशाल्लाह ये भी बात करेंगे अगर, और ज़रूर करेंगे, आएगा मौका ऐसा। ज़रूर इंडिया ने अप्रोच किया होगा इनको, क्योंकि इन्होंने भी कोई कम काम नहीं किया। थोड़े अरसे में आप देखें दुनिया को दोस्त बनाया है। जो हमसे नाराज थे वो राजी हो गए हैं। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं चाहे आइन पे बात करनी है, खुशामद नहीं, हकीकत है कि ये ओहदा सूट करता है इनको। कुछ लोगों ने कहा नहीं चेयरमैन तो हैं, वो कहाँ जाएगी, वो तो हैं। देखें ना, सारे मुतरफ है, सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ हैसियत के लोग हैं, बड़ी हैसियत के लोग हैं। तो जनाब 90,000 कैदी भी ले आए, और ये इलाका मैं नहीं कहूँगा, खैर वो माइंस लगे हुए थे, और काफ़ी कोई महीना 1.5 लगा उस इलाके को साफ़ कराने में। नगर पार्क, छाछरो और पोर्शन ऑफ इस्लामकोट। अब देखें ना जी, उस वक्त तो उनको ये कहा गया, मैं अल्फाज भी भूल रहा हूँ, कि क्या करेंगे आप, ज़मीन उधर तो घास भी नहीं निकलता, रेती रेत है, उसमें क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं एक चप्पा भी अपनी ज़मीन का इंडिया को नहीं दूंगा, किसी और मुल्क को नहीं दूंगा। ये जज्बा उनका, कौमी जज्बा। बहुत से लोगों को बात करनी है, तो जनाब आप भी दिख रहे हैं। नहीं मैं आइन की तो अभी बात नहीं की, फंडामेंटल है।
ایک چیز کا انکشاف آپ کرتا ہوں کہ جب ہم نے یہ سیمینار پلان کیا کہ کرنا ہے، مقررین کون کون ہوں گے، ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ کسی مقرر کو وقت کرنے کی پرچی نہیں دیں گے. لیکن میں نے یہ بات پہلے بتانا مناسب نہیں سمجھی کیونکہ کہیں پھر یہ شاید زیادہ طویل ہو جاتا، تو ہم نے ڈیسائیڈ ہی کیا تھا کہ کسی کو روکنا نہیں ہے. اب میں اپنے اگلے مقرر کو بلانے جا رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں. میں عام طور پہ ججوں پہ بہت زیادہ بات کرتا ہوں، لیکن خوشی اس بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے ججز بھی ہیں جن پر ہمیں فخر ہے، جنہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد بھی کی ہے، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں. انہی میں سے ایک جسٹس ریٹائر رشید رضوی صاحب ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی وقایت کر سکیں. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، جسٹس مقبول باقر صاحب، جناب چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، اسپیکر پروونشل اسمبلی، معزز اراکین پریسیڈیم، معزز خواتین و حضرات، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ چیئرمین کو سننے کے لیے بےتاب ہوں گے. میں اپنے آپ کو کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ بات کروں، اس لیے کہ ایک کنسنسس بن چکا ہے مجھ سے پہلے جو اسپیکرز آئے ہیں کہ خدمات جتنی ہے پیپلز پارٹی کی اس ملک کے لیے، اس میں سب سے بڑی جو تحفہ ہے قوم کو وہ 73 کا آئین ہے. اس کا اندازہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پبلک کیا جائے، جو نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ ہے 4,500 صفحات سے زیادہ فل اسکیپ پیپر پہ 4 والیومز میں ہے، نیشنل اسمبلی نے اس کو ایشو کیا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کے لوگ، کس طرح سے لوگ ایک ایک آئین پر، ایک ایک پروویژنز پہ. سب سے بڑی کام کی بات جو کی بھٹو صاحب نے، وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن 1972 پہلے امپوز کیا اور اس کو ڈیبیٹ کیا، ورنہ اس کا بھی وہی حال ہوتا جو فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا ہوا. 9 سال لگا دیے اس اسمبلی نے 56 کا کانسٹیٹیوشن بنانے میں، اور پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی قیادت میں 1.5 سال کے عرصے میں انٹرم کانسٹیٹیوشن اور پرماننٹ کانسٹیٹیوشن دیا آپ کو. دوسری تحفہ جو تھا، جس کے ون آف دی آرکیٹیکٹ یہاں موجود ہے جناب میاں رضا ربانی صاحب، وہ 18th امینڈمنٹ ہے. 100 سے زیادہ امینڈمنٹس تھی. کیوں میاں صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ 100 سے زیادہ امینڈمنٹس تھی 18ویں ترمیم میں، اور بہت سے مارشل لاز کے برائیاں اور جو امینڈمنٹس اللیگل ان آتھورائزلی ہوئی تھی انہیں ریموو کی گئی. لیکن لوگوں کا جو کنسنسس اسپیکرز کا یہاں بن رہا ہے کہ وی نیڈ امپروومنٹ، اور میں اپنے آپ کو اسی پہ کنفائن کروں گا. حالانکہ پیپلز پارٹی کو بعد میں بھی موقع ملا تھا 73 کے بعد 1988، 94، 2018، ان تینوں پیریڈ میں
18th अमेंडमेंट 2010 अप्रैल को गालिबन इम्प्लीमेंट हुआ। हम लोगों जब नए नए प्रैक्टिस में आए 73 का कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त इम्पोज हुआ, प्रोमुलगेट हुआ, तो उस वक्त के तजर्बे ने बताया कि आइन की स्प्रिट जो है वो 3 इंस्टीट्यूशन पर है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। और मैं लोगों से कहता हूं कि अब हम जब जिंदगी के आखिरी 2 ओवर खेलने में लगे हुए हैं, हमें पता चला एक चौथा इंस्टीट्यूशन भी है जो हमें नहीं पढ़ाया गया, वो इन तीनों इदारे से बड़ा है और गैर आईनी है। वो जब चाहता है जिस इदारे पे हमला करे कर लेता है, उसको कोई पकड़ने वाला, हाथ रोकने वाला नहीं है। तो जनाब चेयरमैन साहब, ऐसे भी इदारे, इनविजिबल इदारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें चेक करने की जरूरत है। दोस्तों ने बात की मुझसे पहले 63A की अमेंडमेंट पर, वो रिपोर्ट भी हो गया। अब जजमेंट PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 42। कमाल की बात है, ये वाहिद सजा इम्पोज की है उन लोगों ने जो क्राइम कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले सजा दे दी है लोगों को। डिफेक्शन का क्राइम उस वक्त कंप्लीट होगा जब चेयरमैन आफ्टर हेयरिंग द मेंबर, आर्टिकल 63A में है कि बिफोर इशूइंग नोटिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन, हेड ऑफ द पार्टी will give a chance of hearing show cause notice to the alleged defector। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब किसी को oblige करना था, उन्होंने आर्टिकल 17 क्लॉज 2 को इतना एक्सपेंड कर दिया है 63A इंटरप्रेट करने के लिए कि वो 10A को भूल गए, जो एक तारीखी आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था 18th अमेंडमेंट के तहत, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हालांकि गारंटी दी है आर्टिकल 63A ने कि विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन भूल गए जजेस, जैसे है ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं है, उसको नजर ही नहीं आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 68(3) में। और चेयरमैन साहब, एक जजमेंट और है जिसका दोस्तों ने हवाला नहीं दिया, उसको भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 199, जिसमें हाई कोर्ट और आर्मी को पर्सन की डेफिनेशन से बाहर किया गया है। एक जजमेंट आई थी, चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की बेंच थी, और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से और बड़ा अहम फैसला है वो, उसमें कह दिया था कि हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है और आर्टिकल 199 लाई करेगी। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी ने ये कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी जो है प्रोटेक्टेड है क्लॉज 5 में आर्टिकल 199 में, जो कि उससे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है, वो भी किया है। अब मैं समझता हूँ ज़रूरत है इस चीज़ की कि आर्टिकल 199 का क्लॉज 5 को इंटरप्रेट करें, और ना सिर्फ हाई कोर्ट को बल्कि एक इदारा और भी है उसे भी बाहर करें उससे, और उसको बिल्कुल वाइड करें। मुझे याद आ रहा ईयर 1998 सार्क लॉ कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में, और सार्क कंट्रीज के सारे जजेस और सीनियर एडवोकेट्स आए थे।
اور ہم لوگوں کے بڑے آئیڈیل جج ہیں انڈین سپریم کورٹ کے فارمر جج کرشنا آئر، وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے آرٹیکل 3 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پر 1 گھنٹے بولا تھا وداؤٹ ریڈنگ اینی پیپر، جبکہ ہمارے ججز کانسٹیٹیوشن پہ پیپر لکھ کر لائے تھے. انہوں نے وداؤٹ ریڈنگ اینی پیپر ڈیفائن کیا کہ دس از دی اسپرٹ آف یور کانسٹیٹیوشن. جناب چیئرمین صاحب، میں یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 3 میں یہ گارنٹی دی گئی ہے قوم کو کہ all kind of exploitation shall be eliminated. اس کے طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ ڈسکس بھی ہوا تھا. elimination of all forms of exploitation. آج کل جو سب سے بڑا ایکسپلائٹیشن کا ٹول ہے ورکنگ کلاس میں، وہ ہے کانٹریکچوئل لیبرز. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آج مجھے مالک دروازے کے اندر بلائے گا نہیں بلائے گا. وہ 12 سال 14 سال 300 روپے روز پہ آج کل کام کرتا ہے، جبکہ سندھ واحد صوبہ ہے پورے پاکستان کا جس نے 25,000 روپے منیمم ویج رکھی تھی، اسے بھی سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا. اس طرح سے وہ 25 دن کام کرتا ہے 300 400 500 روپے ڈیلی پر، اور اس کے 15,000 بھی نہیں بنتے ہیں. چیئرمین صاحب، یہ دس از ون کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا. میاں محمود علی قصوری نے ایک بات سجیسٹ کی تھی. انٹرم آرٹیکل میں، انٹرم کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 39 اور 40 تھے جو پرماننٹ کانسٹیٹیوشن میں نہیں انکلوڈ ہوئے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ آرٹیکل 39. The well-being of the people, irrespective of caste, creed or race, should be secured by raising the standard of living of the common man, by preventing the undue concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to the detriment of interest of a common man, and by ensuring an equitable adjustment of rights between employers and employees and between landlords and tenants. Article 40 tha, all citizens should have the opportunity to work and earn an adequate livelihood and also to enjoy reasonable rest and leisure. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کے 3 سلوگنز میں سے ایک امپورٹنٹ سلوگن کہ ہماری معیشت سوشلزم ہوگی. بغیر ان آرٹیکلز کو انکارپوریٹ کیے آپ آرٹیکل 3 کے اچیومنٹس حاصل نہیں کر پائیں گے. دس از مائی ہمبل سبمیشن کہ اب کبھی انشاءاللہ لگتا ہے آنے والا وقت پھر پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھی جائیں اور ورکرز اور ملک کے پیزنٹس کے لیے بھی کچھ کیا جائے. دوسری چیز میں کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن میں آج کل جو ہے ایک اور پرابلم ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے کیبنٹ پہ. میں سمجھتا ہوں آج کی پارلیمنٹ نے 75 سے زیادہ منسٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا بڑھ گئے ہیں.
اگر 2-4 پارٹیاں اور کولیشن میں شامل ہوئی تو سینچری ہو جائے گی. تو اس پر بھی امینڈمنٹ آنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں منسٹری شوڈ بی ڈیفائنڈ, منسٹری آف لا, منسٹری آف جسٹس, منسٹری آف لیبر. یہ اپنی طرف سے بھی منسٹریاں بنتی ہیں, 2 سیکریٹری لے کے وہ بیٹھ جاتا ہے, ایڈوائزر بن جاتا ہے. یہ اس غریب آدمی پہ جو انکم ٹیکس دے رہا ہے, جو سیل ٹیکس دے رہا ہے, جو اور ٹیکسز دے رہا ہے, اس سے آپ زیادتی کر رہے ہیں. کام کرنے والے ہم جیسے ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں, اپنے سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں, کام کرنے والے تو 2-4 ججز ہی ہوتے ہیں, تنخواہ 16, 14, 20, 25 کو ملتی ہے. وہ کیبنٹ کا آپ حال نہ کریں کہ کام تو 10 کر رہے ہیں, 12 کر رہے ہیں اور تنخواہ 85 کو مل رہی ہے. آرٹیکل 209 پہ بھی بات کی گئی. میں بالکل اتفاق کروں گا کہ چیئرمین صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ججز کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو پا رہا ہے. بار بار نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ فیصلے جتنے بھی ہوں سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ پبلک ہونے چاہیے. میں کیس ایک لڑ رہا ہوں جسٹس شوکت صدیقی کا, اسلام آباد کا. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے باہر سے خطاب کرتے ہوئے چوتھے ادارے کا ذکر کر دیا تھا. ان کو اس سزا میں ملی ہے. ہمیں 1-2 فیصلوں کی ضرورت تھی, آج تک اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی ہے. ان کے خلاف جن کا بہت چرچا ہو رہا ہے نام کا, مظاہر علی نقوی صاحب, ان کے پر بھی ایک 209 کی پروسیڈنگز تھی, اس کا آرڈر بھی نہیں مل رہا ہے. کہاں گیا, کدھر گیا, وہ ایکوٹ ہو گئے. تو یہ تجربہ میں سمجھتا ہوں ناکام ہو گیا ہے. اس کو اب انڈین جو پیٹرن پہ کرنا پڑے گا کہ ججز ناؤ شوڈ بی ٹرائل بائی دی پیپلز ریپرزینٹیٹیو. اس لیے کہ جیسے ہم بیوروکریسی میں دیکھتے ہیں, ایگزیکٹو میں دیکھتے ہیں پالیٹکس گروپنگز, جوڈیشری میں بھی اب وہ آ گئی ہے. ایک گروپ ججوں کا اگر بیٹھا ہوا میجورٹی میں, وہ دوسرے گروپ والے کو تو رگیت دے گا, اپنے آدمی کو نکال دے گا. تو یہ ان کی ہیرارکی سے نکال کے آپ کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لانا پڑے گا. پارلیمنٹ میں بہت پروٹیکشن ہے, 2/3 میجورٹی سے نکالنا پڑے گا, وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز تو ہوگی. ایک خوف تو ان کو ہوگا کہ اب ہمارا آدمی نہیں ہے, ہم بچ نہیں سکتے ہیں. یہی چیزیں کی میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب, آئندہ اگر آپ لوگ آئیں اور اللہ موقع دے تو کچھ بات غریبوں کی بھی ہو جائے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ رضی صاحب. میں ایک شاید آپ کے بھی ضرور علم میں ہوگا, لیکن میں بتا دوں کہ سندھ میں 25,000 منیمم ویج بالکل ہے. وہ لٹیگیشن ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ سارٹ آؤٹ کر کے ہم نے کر دی تھی 25,000, تو اس کے بعد پورے پاکستان میں بھی ہو گئی. دوسری جو بات آپ کر رہے تھے, میں شاید لاء کو اتنا نہیں جانتا ہوں اور شاید آپ اس سے یقینی طور پہ زیادہ جانتے ہیں. آپ نے چوتھے پلر کی بات کی, لیکن یہاں تو لوگ اس ادارے کے ایک ونگ کو ریاست کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ریاست کے 3 پلر ہیں. یہاں پہ اس چوتھے جو انویزیبل جو ایک جس کو آپ پلر کہہ رہے ہیں, ادارے کا ایک ونگ ہے جس کو لوگ ریاست کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ریاست کچھ اور ہوتی ہے, ادارے کا کوئی ایک ونگ نہیں ہوتا جو مینیپولیشن کرتا ہے.
अब मैं जिस मुकर्रर को बुलाने जा रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ और ये अक्सर मेरा ख़्याल भी है कि अदालतों की, मुअज़्ज़ज़ अदालतों की और मुअज़्ज़ज़ जजेस की इज़्ज़त जो है वो तौहीन अदालत के खौफ से नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं जो तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माज़रत के साथ शायद खौफ से उनके सामने लोग ना बोलते हों, दिल में शायद बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे मुअज़्ज़ज़ जजेस भी हैं जिन्होंने कभी तौहीन अदालत के कानून का सहारा नहीं लिया। वो अदलिया में थे तब भी, रिटायर हो गए तब भी लोगों ने दिल से उनका एहतराम और इज़्ज़त किया है। और उनमें एक नाम जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब का है जो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब से कि वो आएँ और इस सेमिनार से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, esteemed speakers, respectable guests, ladies and gentlemen, अस्सलाम अलैकुम। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे थोड़ी सी कोताही हो गई है। छोटा सा नोट मैंने अंग्रेज़ी में बना लिया है, तो लिहाजा मैं अंग्रेज़ी ही में इसको आपके सामने पेश करूँगा। The Constitution of Pakistan represents the aspiration and dreams of the people, and today we have gathered here to celebrate its 50th anniversary. It is a great honor to be speaking at such an important occasion. This country has been achieved through enormous sacrifices and relentless struggle of our forefathers for an independent democratic state, wherein the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, and wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people as a sacred trust, wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, wherein independence of judiciary shall be fully secured, so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness and happiness of humanity. The above vision, conviction and commitment find expression in the shape of the preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. This constitution that we achieved through the unremitting struggle of the people of this country after years of disillusionment and failures has provided to us a complete scheme and a robust mechanism for realizing the vision of our founding fathers and the aspiration of the toiling millions of this country. It is indeed one of the greatest achievements of Shahid Zulfikar Ali Bhutto. Our constitution reflects the desire that this country be run by a popularly elected government that adheres to the fundamental law. However, I have to sadly say that after 75 years of our independence and 50 years since we adopted the 1973 Constitution, we have not been able to realize the spirit and essence set out therein.
It is with a heavy heart that I have to say that we have even failed to adhere to some of the most basic tenets. The people of this country are more often than not denied their constitutionally guaranteed rights and principles of equality, fairness, tolerance, and respect for democratic norms, and are flouted with impunity. Efforts whenever made for the supremacy of the Constitution and the rule of law have been thwarted with full force. The principle of trichotomy of power and the concept of devolution have been trampled with contempt. Arrogance, self-righteousness, and apathy are ruling the roost. We have come to this unfortunate pass in most part because of the repeated direct unconstitutional interventions and manipulations by undemocratic forces, lust of power, desire to capture and rule, and personal ambition have resulted in violation of prescribed jurisdictional limits and ceding of political space in governance. Aggravating this is the denial of grassroots representation of the people in local government, which is against our constitutional ethos and violates the true essence and spirit of democracy. Public welfare and poverty alleviation have thus been at the lowest rung of our priorities. The widespread suppression of dissent has remained another anathema to our democracy, and egalitarian order remains a distant dream. It is hard to deny that many of our wounds are self-inflicted. The principal reason for our affliction is our disregard for the fundamental prescriptions, constitutional prescriptions. It would be apt, given my legal and judicial career, to avail this opportunity to reflect upon my institution's role in our constitutional history. It took us 9 years after independence to adopt our first constitution in 1956. It could survive only 2 years. When the first martial law was imposed, repeated military interventions have retarded the evolution of democracy in the country. The decision of the federal court in Maulvi Tamizuddin case to uphold dissolution of assemblies is perceived as the first step down the slippery slope of judicial acquiescence in executive excesses. 2 years later, the 1956 Constitution was abrogated and martial law was imposed. The judiciary further tarnished its image by supporting this step. General Ziaullah's martial law imposed in 1977 was also validated by Supreme Court. A perverse mechanism by way of doctrine of necessity was deployed by the court in both the cases. Although Governor General Ghulam Muhammad was declared to have no authority to innovate constitutional provisions, General Zia was authorized to amend the Constitution. The public's confidence was further shaken by the judicial murder of Prime Minister Bhutto, where the Chief Justice of the Lahore High Court, bent upon conviction, dismissed all applications seeking his recusal on ground of bias. Unfortunately, the appeal against this historic wrong was dismissed by the Supreme Court by a razor-thin majority achieved through the vote of an ad hoc judge.
two judges who were seemingly not inclined to uphold the conviction were prevented from participating. The presidential reference filed with regard to the above has been lying dormant for more than a decade. Zia maintained his stranglehold not only through a series of legal maneuvers and martial law orders, but also resorted to the removal of unpliable judges. Repeating its history, the Supreme Court also upheld Jalal Musharraf's martial law and authorized him to amend the constitution. Political constitutional misadventures continued even after restoration of democratic order. The glaring inconsistency in deciding the two cases filed against the dissolution of assembly during the tenure of Shahid Mohtarama Benazir Bhutto and Mia Nawaz Sharif respectively has raised many eyebrows. Repeated failure of judiciary to uphold the constitution and protect democracy have played their part in the country's political, economic and social woes. Among various factors responsible for this performance is the flawed process of induction and elevation of superior court judges, which suffers from lack of transparency and objectivity. This has created fissures not only between the bench and the bar, but within the judges as well. It is now common perception that more often inductions and elevations are based on favoritism and nepotism. Despite repeated demands from the bar, civil society, and majority of the members of Judicial Commission for defining criteria for judicial appointments, no efforts has been made in that direction. Nor is a plausible reason or justification given when senior judges, despite their impeccable record, are superseded by their juniors. Composition of benches and assignment of cases of national significance to a select few whose judgments as well as conduct are being widely questioned is also eroding the independence and legitimacy of the judiciary. Judicial overreach, rewriting of statute, and reading into the constitution is another matter of great concern. Contempt for political process, parliamentary democracy, and provincial autonomy is now expressed without inhibition. It is no coincidence that this goes hand in hand with a clear lack of consideration for the plight of the common man in many of the court's judgments. All of this calls for serious introspection and remedial measures. Nonetheless, I take heart from the presence of a good number of upright, capable and courageous judges at all levels of our judiciary, including the Supreme Court. I part with the hope that they inspire their colleagues. Thank you. Pakistan Paindabad. बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी साहब। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम आज के मुअज़्ज़िज़ मुकर्रिरीन का जो सेमिनार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दावत पर शरीक हुए, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी साहब,
जस्टिस रिटायर रशीद अहमद रिजवी साहब, यूसुफ लगारी साहब, महमूद शाम साहब, स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली आगा सराज दुरानी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब निसार अहमद खोड़ो साहब, साईं कायमल शाह साहब, यहाँ तशरीफ़ लाए फैसल करीम कुंडी साहब। अब मैं चेयरमैन साहब को दावत खिताब देने से पहले तमाम जो यहाँ वकलाए कराम तशरीफ़ लाए हैं, मुख्तलिफ़ बार काउंसिल्स के जो अहदेदारान तशरीफ़ लाए हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़िज़ जो वकला लीडर्स हैं वो तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साफ़ी दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस सेमिनार में उन्होंने शिरकत की और सेमिनार को कामयाब किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि इस सेमिनार की सदारत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, और ये भी हम जैसे जमहूरियत पसंदों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज हम जिस आइन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया, और उस आइन की पासदारी के लिए, उसको कायम व दायम रखने के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए उस जिद्दोजहद का जो तसलसल था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब से, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से होता हुआ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कंधों पर है। और आज भी इस मुल्क के जमहूरियत पसंद लोगों के लिए इस मुल्क की पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, अदलिया की आज़ादी हो, इज़हार राय की आज़ादी हो, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पासदारी हो, अगर मुल्क के लोगों को, गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों को, अक़लियतों को कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है। मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, रज़ा रब्बानी साहब का, ऑनरेबल जज साहिबान का, कि वो आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि हम इस मुल्क की आइन को 1973 की आइन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में मना रही है, और हमने इसका लॉन्चिंग सेरेमनी इस्लामाबाद में पार्लियामान में रखा था, और अब जो पहला हमारा सूबाई सेमिनार है वो सूबा सिंध में हो रहा है। और मैं ख़ास तौर पे आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि दिस इज़ पीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हम अपना संडे आइन का सेलिब्रेशन मनाते हुए गुजार रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ये काम कर